Hello everyone, Maths Power channel welcomes you. Today we are going to start chapter number 14, Geometry Practical, એટલે કે પ્રાયોગિક ભૂમિતિ. Here are some points of remember of this chapter. So let's remember it. Point number 1, it is possible to construct a circle of a given radius using compasses and a ruler. ધેટ મીન્સ આપણને જે ત્રિજ્યા આપી હોય એના બેઝ ઉપર આપણે કંપાસીસ ધેટ મીન્સ પરિકર એન્ડ અ રૂલર ધેટ મીન્સ સ્કેલ ધેટ મીન્સ સ્કેલ અને કંપાસનો યુઝ કરીને આપણે સર્કલ ડ્રો કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, it is possible to construct angles of measure 60 degree, 90 degree, 45 degree, 30 degree, 15 degree, 7.5 degree, 22.5 degree, 75 degree, 105 degree, 120 degree and 135 degree using a pair of compasses and a ruler. That means કે આપણે રૂલર અને કંપાસનો યુઝ કરીને 60 ડિગ્રી, 90 ડિગ્રી, 45 ડિગ્રી, 30 ડિગ્રી, 15 ડિગ્રી, 7.5 ડિગ્રી, 22.5 ડિગ્રી, 75 ડિગ્રી, 105 ડિગ્રી, 120 ડિગ્રી એન્ડ 135 ડિગ્રીનો એંગલ્સ ડ્રો કરી શકીએ છીએ. Now the next point, it is not possible to construct angle of measures 20 degree, 42 degree, 55 degree etc. using a pair of compasses and a ruler. Pair of compasses અને રૂલરની મદદથી 20 ડિગ્રી, 42 ડિગ્રી, 55 ડિગ્રીનો એંગલ ડ્રો કરી શકતા નથી. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. તો તમને એક્ઝામમાં એવું પૂછી શકાય, બ્લેન્ક મેઝર્સ ઓફ એંગલ is not possible to construct by pair of compasses and ruler, and the option is 20 degree, 60 degree, 90 degree and 45 degree. So the our answer is 20 degree. આવી રીતના તમને આમાંથી MCQ પૂછી શકે. ઓકે, now the next point, the pencil used for construction should be sharp. That means આપણે જે કન્સ્ટ્રક્ટ કરવા માટે કોઈ પણ વસ્તુની રચના, કોઈ પણ चाहे वो सर्कल हो या फिर लाइन सेगमेंट, अगर हमें उसका कंस्ट्रक्शन करना है तो पेंसिल शुड बी शार्प. एकदम अणीदार पेंसिलનો યુઝ કરવાનો છે. સેગમેન્ટ એન્ડ લાઇન્સ શુડ બી થીન. સેગમેન્ટ તમે જે પણ રેખાખંડની લાઇન ડ્રો કરો એ હંમેશા કેવી હોવી જોઈએ? થીન હોવી જોઈએ. મેઝર ઓફ એન એંગલ મે બી written as एंगल 60 डिग्री और मेजरमेंट ऑफ एंगल 60 डिग्री. धैट मीन्स जो मारे एंगल ए एवं लखવું હોય તો એને બે મેથડથી લખી શકાય. ફર્સ્ટ, એંગલ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 ડિગ્રી એન્ડ ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ angle, measurement of angle is equal to 60 degree. So here are points of remember and we have to remember it. Okay, so let's start exercise 14.1. In the question number 3, draw a circle and any two of its diameters. અહીંયા આપણને એવું કીધું છે, કોઈ એક સર્કલ દોરો અને કોઈ પણ બે ડાયામીટર્સ દોરો, રાઈટ? તો સૌથી પહેલાં સર્કલ માટે સર્કલ માટે આપણે કંપાસનો યુઝ કરીશું. ઓકે, વી યુઝ કંપાસ. ચાલો, પહેલાં આપણને શું ડ્રો કરવાનું કીધું? સર્કલ. તો ચાલો આપણે સર્કલ ડ્રો કરી દઈએ. ઓકે, જે સર્કલ માટે તમારે કંપાસનો જ યુઝ કરવાનો છે. કંપાસ વગરનું સર્કલ નહીં ચાલે. ઓકે, એની ઓફ રેડિયસ ધેટ મીન્સ તમે કોઈ પણ ત્રિજ્યા લઈને સર્કલ દોરી શકો, એવું કંઈ જરૂરી નથી. ઓકે, જસ્ટ વેઇટ, એકદમ કરેક્શન સાથે દોરજો. ચાલો, મારું એક સર્કલ દોરાઈ ગયું છે. હવે એ સર્કલને હું નામ આપી દઉં છું O. સર્કલ, સેન્ટર ઓફ ધ સર્કલ વિલ બી O. ઓકે, ચાલો, નાઉ ડ્રો એની ટુ ડાયામીટર્સ. ડાયામીટર્સ એટલે કે વ્યાસ, અને ખબર છે ડાયામીટર્સ આર પાસીસ થ્રુ ધ સર્કલ. સર્કલ મેં से passes through the center of the circle. चलो, center of the circle
just wait. Yes, done. And the next one, this. Chalo, ready? Number 1, if you join the ends of the diameters, what is the figure obtains? જો ends of the diameter એટલે આપણે એના end point ને join કરવાના છે આ રીતે. end point ને join કરીએ તો તમને કઈ ફિગર મળશે? આપણને એવો ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે. ચલો, end point ને આપણે join કરી દીધા તો આપણને કઈ ફિગર મળે છે? રેક્ટેંગલ. ક્લિયર? Again, draw a circle and any two of its diameter. हमने पहले सर्कल ड्रॉ किया and the name of the center of the circle will be O. O नेम दे दिया, ठीक है. अभी next, if you join the ends of the diameter, what is the figure obtained? જો આપણે એના વ્યાસના ડાયામીટરના જે એન્ડ પોઈન્ટને હું જોઈન કરું છું તો આપણને કઈ ફિગર મળે છે? તો ઇટ વિલ બી રેક્ટેંગલ. हम उसका नाम दे देंगे PQRS. હવે ચેપ્ટર નંબર 14 માં આપણે કન્સ્ટ્રક્ટ તો કરી દીધું, રચના તો કરી દીધી, બટ વી હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન સ્ટેપ્સ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન. સ્ટેપ્સ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન ફરજિયાત લખવા પડે, રાઈટ? તો સ્ટેપ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન એવું નથી કે ડિક્ટ ટુ ડિક્ટ લખવાના. સ્ટેપ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન મતલબ વોટ? કે માની લો સૌથી પહેલાં મેં શું કર્યું? તો આપણે એક સર્કલ ડ્રો કર્યું तो हम लिखेंगे फर्स्ट वी ड्रॉ द सर्कल. ओके, सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद हमने डायमीटर ड्रॉ किया तो वो डायमीटर लिखेंगे. उसके बाद हमने डायमीटर का जो एंड्स था उसे ज्वाइन किया, वो ज्वाइन किया, वो भी लिखेंगे, ठीक है. और कौन सी फिगर हमने बनाई? तो रेक्टेंगल, राइट. तो अब उसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे वो देखो. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1, मार्क अ पॉइंट O ऑन अ पेपर. पेपर पे हमने O पॉइंट लिया. विथ सेंटर O एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस, यानी हमने इसकी रेडियस फाइनल नहीं की थी, मतलब आने त्रिज्या કેટલી લેવી એ તમારી ઉપર ડિપેન્ડ છે, રાઈટ. ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल ड्रॉ किया. ड्रॉ 2 डायमीटर्स PR एंड QS ऑफ द सर्कल. ये PR एंड QS हमने डायमीटर ड्रॉ किया. गेट द क्वाड्रिलेटरल्स PQRS बाय जॉइनिंग द एंड्स ऑफ दिस डायमीटर. आ जे एंड હતા એને જોઈન કરીને આપણે જે ફિગર ડ્રો કરી એને શું કીધું? ક્વાડ્રિલેટરલ્સ, એટલે એક ચતુષ્કોણ બન્યો. હવે આ ચતુષ્કોણ કયું છે એ આપણે જોવાનું. મેઝર દ साइड एंड एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स. चलो, अभी हमें मेज़रमेंट करना है. मेज़रमेंट से हमें पता चलेगा कि ये कौन सा है. चलो मैं मेज़रमेंट करती हूँ, आप देखो. पहला मेरा हो रहा है 3.5 हो रहा है PQ, तो मेरा RS भी 3.5 होना चाहिए. वेरी गुड, 3.5 हो रहा है. अभी मेरा QR हो रहा है 1.7 सेंटीमीटर हो रहा है. ये PS भी वेरी गुड, यस 1.7 हो रहा है. यानी बोथ लेंथ एंड ब्रीथ आर सेम. ओके, बोथ ऑफ लेंथ एंड द बोथ ऑफ ब्रीथ आर सेम. केम? कारण के આપણે રેક્ટેંગલ જોયું છે, રેક્ટેંગલના સામસામેની બાજુઓના માપ કેવા હોય? સરખા હોય. ઓકે, साइड एंड एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर, सो द क्वाड्रिलेटर्स PQR इज अ रेक्टेंगल, राइट. PQRS कौन सा है? रेक्टेंगल. अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है वो देखो. विच फिगर इज ऑब्टेन इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिक्युलर. હવે અહીંયા ડાયામીટર ઓપોઝિટ હતા, રાઈટ. હવે અહીંયા ડાયામીટર એવા દોરવાના છે પરપેન્ડિક્યુલર. પરપેન્ડિક્યુલર મીન્સ વિચ આર इंटरसेक्ट्स एट 90 डिग्री, जे 90 अंशना खूणे छेदे, राइट. चलो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते थे इस तरह से, राइट. यस, लाइक दिस. चलो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है. ये सर्कल हो गए. अभी यहाँ पे O क्या लिखेंगे हम? O. रेडी. अब हम क्या करेंगे? इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डायमीटर्स, दैट मीन्स क्रॉस दिस वे, ठीक है.
ठीक है, परपेंडिकुलर कर दिया। अब व्हाट इज द फिगर ऑफ टेंस, अब हम क्या करेंगे, ये एंड पॉइंट्स है ना, उसे हम ज्वाइन कर देंगे दिस वे। ओके, हमने एंड पॉइंट ज्वाइन कर दिया। चलो, व्हाट फिगर इज ऑब्टेन, तो ये फिगर कौन सी बनी, स्क्वायर बना। कौन सा बना, स्क्वायर बना, राइट। हम उसका नाम दे देंगे PQRS। okay, now we have to write down points of construction. Shall points of construction, number 1, draw the circle with center O। हमने सेंटर O के साथ सर्कल बना दिया। now the next, draw two diameters PR and QS perpendicular to each other। PR and QS जो perpendicular थे हमने वो ड्रॉ किया, यस, डायमीटर। join their ends to get the quadrilateral PQRS, हमने उसका एंड पॉइंट ज्वाइन कर दिया, यानी चतुष्कोण, क्वाड्रिलेटर एटले चतुष्कोण, क्वाड्रिलेटर PQRS मिला। thus all the side of the quadrilaterals PQR are equal। चलो, अब सबकी साइड इक्वल आएगी। चलो मेजरमेंट करते हैं कैसे आएगी। यस, 2.4 तक है। ओके, 2.4 यहाँ पे देखते हैं। वेरी गुड, यस, हियर भी 2.4। आपको भी मेजरमेंट करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये राइट है या रॉन्ग, ठीक है। ये भी 2.4 है, नो सॉरी, इट्स नॉट 2.4, इट्स 2.7। ओके, सबका यस, ये भी 2.7। ओके, देखो एग्जैक्टली मेजरमेंट आपका आना ही चाहिए। यहाँ से फाइनल करती हूँ, कितना है मेरा, देखो ये 2.3 है, ठीक है। अब RS को फाइंड करूँगी, वो भी कितना आया, वेरी गुड, यस, 2.3 एंड दिस वन इज ऑल्सो 2.3 एंड दिस वन also 2. यानी all the sides are equal, so a polygon which has all the sides are equal are square। क्या आएगा, स्क्वायर। ओके, thus all the sides of the quadrilaterals PQRS are equal and each angle is a right angle। वो तो पता ही है, क्यों, क्योंकि डायमीटर परपेंडिकुलर से, इसलिए। so the quadrilaterals PQR is a square। રેડી, તો આ છે ફિગર આપણી રેડી થઈ છે, અંદરની એ કઈ છે, સ્ક્વેર છે। ઓકે, now the next question number 4, draw any circle and mark points A, B and C। चलो, ड्रॉ एनी सर्कल, चलो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, यस, सर्कल एग्जैक्टली होना चाहिए, अगर नहीं होता तो इस तरह से बना दो, सी, इस तरह से आपकी बुक घुमाते जाओ और बनाते जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेक श्योर दैट आपका एग्जैक्टली आना चाहिए। ओके, चलो, अभी ये सर्कल बन गया, ठीक है। हमें इधर बोला गया है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क A, B and C। पहले हम सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी O। ओके, चलो, A इज ऑन ધ સર્કલ। અહીંયા આપણને એવું કીધું છે પોઈન્ટ A છે એ સર્કલ ઉપર હોય તો ગમે ત્યાં તમે મૂકી શકો। ચલો, मैंने इधर रख दिया, ठीक है। B इज इन ધ इंटीरियर ऑफ ધ सर्कल। B इज ધ इंटीरियर એટલે વર્તુળના અંદરના ભાગમાં। ओके, यहाँ पे मैंने B लिख दिया। एंड C इज इन ધ एक्सटीरियर ऑफ ધ सर्कल એટલે વર્તુળના બહારનો, एक्सटीरियर એટલે વર્તુળનો બહારનો ભાગ અને इंटीरियर એટલે વર્તુળનો અંદરનો ભાગ। ચલો, C વર્તુળના બહારના ભાગમાં થઈ ગયું, રાઈટ। તો હવે અહીંયા આપણે કઈ કઈ વસ્તુ માર્ક કરી એ પણ આપણને આઈડિયા આવી જોઈએ, રાઈટ। તો કઈ રીતે માર્ક કર્યું, ફરીથી હું તમને કહી દઉં છું। અહીંયા આપણને શું કીધું છે, ड्रॉ एनी सर्कल। मैंने कोई भी सर्कल ड्रॉ कर दिया है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या बोला, मार्क पॉइंट A, B एंड C। मार्क पॉइंट A, B एंड C। नंबर 1, A इज ऑन द सर्कल। ए कहाँ पे होना चाहिए, सर्कल पे होना चाहिए।
बी इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, बी सर्कल के अंदर होना चाहिए, एंड सी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सी पॉइंट सर्कल के बाहर होना चाहिए। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। हमें पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। सो नंबर 1, solution. The adjoining figure shows a circle with center O. ये दिखा रहा है A is a point on a circle. A point circle पे है। B is a point in the interior of the circle. B सर्कल के अंदर के भाग में यानी इंटीरियर ऑफ द सर्कल है। एंड C is a point in the exterior of the circle. Exterior यानी બહારના ભાગમાં છે. Clear? Now the next question number 5. Just wait for a moment. Okay. Just wait. Yes. Let A be the center of two circle. અહીંયા બે સર્કલ છે, એના સેન્ટરના નામ છે A and B. Of equal radi એટલે એક સરખી રેડિયસ. આ જે પાર્ટ છે આ બંનેનું ત્રિજ્યા રેડિયસ છે એ સેમ હોવું જોઈએ. ડ્રો ધેમ સો ધેટ each of them passes through the center of the other. અહીંયા આપણે બે સર્કલ એવા ડ્રો કરવાના છે કે બંને એકબીજાના સેન્ટરમાંથી પાસ થવા જોઈએ. सिंपल. पहले આપણે છે ને कोई एक सर्कल ड्रॉ कर दिए. जस्ट वेट, मैं अभी देखो एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, चलो एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया. उस सर्कल का सेंटर कौन सा होगा? ए, क्योंकि हमें इधर बोला गया है ए एंड बी होना चाहिए. चलो एक सर्कल का नाम हो गया ए. अभी दूसरा सर्कल इसके सेंटर में से पासिस होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, उसी सर्कल पे एक पॉइंट बना देंगे, उसका नाम होगा बी. अब क्या करेंगे, उस पॉइंट पे हम हमारा पॉइंट रखेंगे कंपास का. ठीक है, अब देखते हैं वो इसमें से पासिस होता है कि नहीं. यस, देखो उसमें से पासिस भी हो गया. राइट, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. ओके, चलो हमारा सर्कल बन गया. फिर से द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडी, ड्रॉ देम सो दैट ईच ऑफ देम पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर. જો આ સર્કલની હું વાત કરું, આ સર્કલ બીના સેન્ટરમાંથી પાસ થાય છે, અને આ સર્કલની વાત કરું તો આ સર્કલ એના સેન્ટરમાંથી પાસ થાય છે. રાઈટ, નેક્સ્ટ, લેટ ધેમ ઇન્ટરસેક્ટ सी અને डी. હવે આ બંને સર્કલ જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે ત્યાં નામ આપો सी एंड डी. यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, उसका नाम दे दो सी एंड डी. एग्जामिन वेदर ए बी एंड सी डी आर एट राइट एंगल. અહીંયા આપણે એવું ચેક કરવાનું છે કે ए बी અને सी डी એ બંને રાइट एंगल છે. जो कई रीते, पहला तो हम दोनों को एडजॉइनिंग करेंगे. राइट, इस तरह से यहाँ पे हम उसका इंटरसेक्ट पॉइंट है वहाँ दे देंगे ओ. अभी हमें कैसे पता चलेगा कि राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? हाफ सर्कल का. ठीक है, प्रोट्रैक्टर का. अब हम क्या करेंगे, यहाँ ओ पॉइंट पे रखेंगे और 90 डिग्री देखेंगे. देखो सी ओ बी 90 डिग्री हो रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है. राइट, ऐसे करो. ए ओ सी भी देख लो, ए ओ सी भी 90 डिग्री हो रहा है. राइट, यानी ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री. राइट, सो यस, ए बी एंड सी डी आर एट राइट एंगल. अभी उसका पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे? देखो, नंबर 1, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ए ऑफ एनी कन्वीनियंट रेडियस. हमने क्या किया, कोई भी रेडियस लेके एक हमने सर्कल बनाया, उसका नाम दे दिया ए. मार्क अ पॉइंट बी ऑन द सर्कल. हमने भी मार्क बी किया था ना ए वाले सर्कल पे. राइट, नेक्स्ट, with the center B and the same radius draw another circle. अभी क्या किया हमने, B पे हमारा जो कंपास है उसका पॉइंट B पे रखा और हमने सर्कल ड्रॉ किया.
This circle intersects the first circle at point C and D, right? ये जो सर्कल्स थे वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? C and D पे. ज्वाइन ए बी एंड सी डी. ए बी एंड सी डी हमें ज्वाइन करना है. मेजर एंगल सी ओ बी. सी ओ बी इज अ राइट एंगल. दिस मीन्स ए बी एंड सी डी आर एट द राइट एंगल्स. राइट, वो तो हमें पता भी चल गया कि हमने भी मेजरमेंट किया था, तो वो मेजरमेंट क्या आ रहा था? 90 डिग्री. दैट मीन्स लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी आर एट राइट एंगल्स. क्लियर? So here our exercise 14.1 completed. I hope you will be understand. Thank you.